निकालना है, दैट इज 2√2. सो इसको 2√2 को ऊपर लाने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल मेक इट उल्टा. 2√2 अपॉन 1 को 1 अपॉन 2√2 करूंगी. सो व्हाट इट विल बिकम 2 अपॉन √2 मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन 2√2. ठीक है, जब ये डिवाइडेड बाय है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगी तो इनवर्स लेना है. 2 upon 2√2 upon 1 becomes 1 upon 2√2. What gets cancelled? 2 gets cancelled. What is multiplied? √2 multiplied by √2 in the denominator. So what is the answer I will get? Answer क्या मिला इसका? What is that here? Here 1 ones are 1. This is cancelled. So 1 ones are 1 मिला. और डिनोमिनेटर में √2 multiplied by √2 कितना मिला? What is √2 multiplied by √2? √2 multiplied by √2 is √2 square. तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? √2 into √2 कितना आना चाहिए? √2 स्क्वायर कितना है? स्क्वायर रूट कॉमन ले लो. 2 into 2 is 4. Square root of 4 is how much? Square root of 4. 16. Square root of 4, not 4 square. Square root of 4. 2. Square root of 4 कितना होता है? 2. 2. So what is the answer? 1 upon 2 is the answer. Okay. So note down. 1 upon 2 is the answer. If you cannot see, I am moving my mobile to show you the remaining part which is not seen. Now can you see? Yes, miss. Copy it fast. Copy करो जल्दी. हर्षली दिसतंय का? हर्षली दिसतंय का? ऐकायला येत नाहीये मला. हा Miss, this that. हा मग लवकर नोट डाऊन करा. आय एम होल्डिंग द मोबाईल. वाय दिस प्रथमेश इज जॉईनिंग हाऊ मेनी टाइम्स? प्रथमेश किती वेळा जॉईन होतोय? कम्प्लीटेड? Yes, miss. Yes, miss. नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. No, miss. कॉपी द नेक्स्ट क्वेश्चन इन योर नोटबुक. प्रूव दैट. अभी प्रूव दैट करना है एवरी टाइम. Can I move to the next? Okay, miss. रब करूं बोर्ड. Okay, miss. Everybody has copied. Good. So now next one, question number 6. No, prove that may first one we have to do. Okay. So next one is prove that. For proving, we are always solving left hand side first and then checking whether it is equal to right hand side. Yes. So that is what every time now in this prove that question we are doing. For the first question, we will start with what we have to do. Let's see. Yes. So first question is prove that in that is the sixth question. Prove that. First one is. Yes, what is the first one? Read it. What is the first one? Sin square theta, sin square theta upon cos theta plus cos theta equals to sec theta. Yes, plus cos theta is equal to sec theta. Correct. Now for this, what I will do is I will take left hand side. What is the left hand side? Only left hand side of equal to sign, right?
So that is sine square theta. Take another chalk. Right? That is sine square theta upon cos theta is equal, plus cos theta. This is given to us, right? Now what I will do is to solve this left hand side, this cos theta means cos theta upon 1 it is. Okay? Now to whenever it is 1, what we do usually, हम डिनोमिनेटर सेम करेंगे तभी एडिशन कर सकते हैं. सो इसके पास 1 डिनोमिनेटर है. cos थीटा करने के लिए आई विल मल्टीप्लाई बाय cos थीटा इन द डिनोमिनेटर एंड इन द न्यूमरेटर टू मेक द डिनोमिनेटर सेम. So what will happen? Sine square theta, right? This will become cos theta into cos theta. What it is? Cos theta into cos theta. Cos theta into cos theta क्या है? 1 into cos square theta. Cos square theta. Cos theta into cos theta is cos square theta. So sine square theta as it is plus as it is, and this is cos square theta upon the common denominator. दोनों का denominator same हो गया है. What is that denominator? Cos theta here also 1 into cos theta. That is cos theta. So both places cos theta is the same denominator, which I copy it only as one denominator for both of them, common denominator. So now can you tell me what is your numerator का आंसर? Numerator कितना है आएगा? Numerator में क्या है? Sin square theta plus cos square theta. How much is the identity? Identity क्या है? Sin square theta plus cos square theta. What is the identity? We wrote in the beginning now. First identity is sin square theta plus cos theta. Cos square theta is equal 1 to. upon sin theta equals to cosec theta. My dear, identity. Beginning मैंने शुरू करने से पहले आइडेंटिटीज लिखा था. Which was the first identity? Yes, miss. In the beginning of the lesson, I started solving. I had written the identities. 3 identities लिखा था मैंने. पहला वाला कौन सा था? Sin square theta plus cos square theta Is equal to 1. So ये वही है. Sin square theta plus cos square theta. From that identity I know इसका value 1 है. So what is the answer? 1 upon cos theta. What is the reason I will write? I will write the reason. Sin square theta plus cos square theta. Identity. Right? Cos square theta is always equal to 1. Can you see I have written the identity on this side? Sin square theta plus cos square theta is equal to 1 always. That is the reason I have put 1 here. I have to write in the bracket as a reason why I wrote 1. Right? So I will write since sin square theta plus cos square theta is equal to 1. I got 1 here. What is 1 upon cos theta? 1 upon cos theta का क्या किसका फॉर्मूला है? Yes, can you see I am focusing it on whatever part I have written. What is 1 upon cos theta? अभी हमने पढ़ा ना प्रीवियस प्रॉब्लम में. 1 upon cos theta मतलब क्या? It is the inverse of what? Sec theta. Correct. तो आंसर क्या आएगा? 1 upon cos theta is sec theta. So sec theta is the right hand side. हमारा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है हमने. हमको प्रूव करना है that this left hand side is equal to sec theta. So हमको sec theta ही मिला है. So I have proved that this left hand side is equal to sec theta. So I will write sec theta is equal to right hand side, and therefore LHS is equal to RHS. So you copy the entire question again down to tell that we have proved that this sin square theta upon cos theta plus cos theta is equal to sec theta. We have proved that. So copy that question again down to tell that it is proved. Okay? Have you copied it? Have you copied? What is your left hand side? Sin square theta अपॉन cos theta. ये पूरा क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा. ये ऐसे
when we are proving something, we always repeat the question saying that this is the question which is equal to sec theta. ये हमारा प्रूव हो गया है. is proved. क्या लिखेंगे आगे? is proved. Can you see what I have written? Yes, miss. हाँ, तो ये पूरा क्वेश्चन लिखेंगे और बोलेंगे is proved, बिकॉज स्टार्टिंग में हमने बोला प्रूव करो, यही क्वेश्चन. तो यही क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया है. ओके, इज इट इजी? Yes, miss. हाँ, सो यू हैव टू यूज योर आइडेंटिटीज. हमारे पास 3 आइडेंटिटीज कौन से हैं? फर्स्ट वन जस्ट नाउ वी यूज. विच वन वाज दैट? फर्स्ट आइडेंटिटी कौन सा यूज किया अभी हमने? Sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Correct. That is the identity we use here. Now, second identity also we can use in other problems, which is that 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. okay. Then the third one, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. perfect. So these identities you have to memorize, remember, and this problems will become easy then, because we have to every time find out which identity I should use here. So if you don't know the identities, you don't know what to use. Okay, so let's do the next one and you tell me what identity I have to use there. Okay, come on. Second question. Shall I rub this? Copy ho gaya? Yes, miss. Yes, miss. Okay, so the next one let us do. Second question. Write it down. Copy झाला का? हे वाला का? सेकेंड वाला लिखो जल्दी से. क्या है? क्या है क्वेश्चन? पढ़ो. Cos square theta. Cos square theta bracket 1 plus tan square theta bracket is equal to 1. यस करेक्ट. 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट इज इक्वल टू 1. तो हमको इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है. तो लेफ्ट हैंड साइड क्या स्टार्ट करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है? क्या है लेफ्ट हैंड साइड? Cos square theta into bracket 1 plus tan theta. यस. सो नाउ कैन यू टेल मी कौन सा आइडेंटिटी से शुरू करूं मैं सॉल्व करने के लिए? कौन सा आइडेंटिटी हैव टू यूज? आइडेंटिटी कौन सा यूज करना है? अभी मैं हर्षली सेड ऑल द आइडेंटिटीज. नो, फ्रॉम दैट विच हाँ, विच आइडेंटिटी आई हैव टू यूज? 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. वेरी सिंपल, बिकॉज यह 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिया है, तो इमीडिएटली उसको देख के वी आर एबल टू गेस कि हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो आई नो आइडेंटिटी में इट इज sec स्क्वायर थीटा. सो आई विल राइट इन प्लेस ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा व्हाट आई विल राइट? मल्टीप्लाइड बाय sec स्क्वायर थीटा. तो ये पूरा ब्रैकेट में sec स्क्वायर थीटा आ गया. नाउ आई विल ओपन द ब्रैकेट. व्हाट विल हैपन? cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय sec स्क्वायर थीटा. Can you tell me sec theta is what? Inverse of? Sec theta is inverse of what? Sec theta is inverse of what? All these inverses, all this formula you have to know, otherwise problem solving becomes difficult. If you know, it becomes very easy. Sec theta is the inverse of, अभी हमने कितने बार यूज किया? 1 upon cos. Exactly, it is the inverse of cos theta. So sec square theta को हम लिखेंगे 1 upon cos square theta, because this is square. Sec square theta becomes 1 upon cos square theta. So now this cos square theta and cos square theta gets cancelled. What remains? What remains? 1. 1. And that is what I want on the right hand side. ये लेफ्ट हैंड साइड है. मुझे कितना मिला लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके? 1. And that is what is the right hand side. So that is equal to right hand side. And thus I can write down the question again कि I have proved it. What I have proved? LHS is equal to RHS. Left hand side is equal to right hand side. What is my left hand side? My left hand side is cos square theta bracket 1 plus tan square theta, and that is equal to 1. I have proved. Is proved I can write down. This left hand side is equal to this right hand side is proved. So that is completing my second question. Okay, third question you try on your own.
ऐसे ही सॉल्व करना है. फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड, देन राइट हैंड साइड इक्वल हो जाता है, एंड राइट डाउन दैट दिस इज प्रूव्ड. तो थर्ड क्वेश्चन करेंगे अभी. कम ऑन, हैव यू कॉपीड द थर्ड वन? Yes, miss. हाँ, shall I rub this? हाँ, can I rub this? Yes, miss. हाँ, third one now. Third one. थर्ड वन क्या है? पढ़ो जल्दी जरा, बताओ जरा क्या प्रॉब्लम है थर्ड वाला. Root 1 minus Yes, theta square root. upon 1 plus Square root we have to theta draw equals to big. sec theta Yes. minus tan theta. Correct. Square root of, draw the big square root, and inside that 1 minus sin theta should fit upon 1 plus sin theta should fit. पूरा स्क्वायर रूट के अंदर फिट होना चाहिए. दैट इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, हाँ, दैट इज इक्वल टू क्या? सेक थीटा माइनस टैन थीटा. Sec theta minus tan theta. This is what I have to prove. So again I start with the left hand side. हाँ? Anything you have to? ऊपर वाला दिख रहा नहीं है. दिख रहा नहीं है अभी तक. दिख ऊपर रहा वाला पार्ट नहीं दिख रहा है. अभी? हाँ मिस. अभी क्लियर है? हाँ मिस. हाँ, ठीक है. If it is not seen, please let me know. So I will get the idea. I will make the arrangement. So left hand side I have to solve. Left hand side is square root of 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta. This is my left hand side. तो अभी ये कैसे सॉल्व करना है? मैं ये स्क्वायर रूट साइन और एक्सटेंड करती हूँ. I will extend the square root sign more. And what I will do? I will multiply by this 1 minus sin theta in the numerator and the denominator. ये same 1 minus sin theta जो यहाँ लिखा है, I will multiply in the numerator and the denominator. So I multiply by 1 minus sin theta, और square root sin के अंदर फिट होना चाहिए whatever I am writing here, upon 1 minus sin theta. Have you extended the root sign? Root sign extend किया आपने? हाँ. Yes, miss. And then you have written this 1 minus sin theta upon 1 minus sin theta multiplied to this. Okay? So now after I have whatever multiplication I have to do, I have to do inside the root. So I will draw the root sign again and multiply this. 1 minus sin theta multiplied by 1 minus sin theta. What it becomes? Square. 2 multiplied by 2, 2 square. A multiplied by A square. This bracket multiplied by the same bracket, this bracket square. Okay, so 1 minus sin theta square it has become. Upon, this is which bracket? 1 plus sin theta. इसमें क्या difference है बोलो? 1 1 same है. sin theta same है. क्या different है? प्लस एंड माइनस. प्लस एंड माइनस. मतलब ये कौन सा फॉर्मूला है हमारा? a प्लस बी ब्रैकेट, अनदर ब्रैकेट मल्टीप्लाइड a माइनस बी. ये वाला फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी. व्हाट इज a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी? भूल गए? a plus b into a minus b is equal to what? This we have done so many times last year. We are using this formula. What is this formula? A plus b into a minus b. A plus b into a minus b is equal to a square minus b square. So what is my here? A square minus b square. This is my a plus b, a minus b. So what will be my a square? 1 square minus b square is sine square theta. Okay, so that formula we have to use in the denominator. Open the now this particular 1 square minus sine square theta I have to solve inside the bracket square root. So again square root I have to draw square root sign.
and then 1 minus sine square theta. I will keep it as it is. Bracket square matlab. And this I will solve. What is 1 square? 1 minus sine square theta as it is. Abhi 1 minus sine square theta, how will I get? From the identity. What is the identity I know? Sine square theta plus cos square theta is equal to what? 1. ये मैं यहाँ पे रफ कॉलम बना के आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. This is my rough column. So if I want to take the sine square theta on the other side, what will remain here? Cos square theta will remain alone here. And 1 minus sine square theta will be shifted over here. So this becomes, my sine square theta becomes minus sine square theta on the other side. So it becomes 1 minus sine square theta. And what remains here? Cos square theta. That means what is 1 minus sine square theta equal to? 1 minus sine square theta is equal to what? What is this? 1 minus sine square theta is equal to what? Cos square theta. So where is my 1 minus sine square theta? Over here. So what is this 1 minus sine square theta equal to? Cos square theta. So here I will write down, right? Again the square root sign. Again the square root sign I will write, and I will put this bracket as it is. Bracket square upon, ये क्या बन गया है? रफ कॉलम में मुझे पता चला है ये क्या है? क्या है ये? From where I got this cos square theta? From the identity. When I shifted the sign on the other side, from that identity I got what is 1 minus sine square theta? 1 minus sine square theta is nothing but cos square theta. Correct? Yes or no? Yes, miss. हाँ, अभी ये स्क्वायर रूट निकालना है. स्क्वायर रूट ऑफ एनी स्क्वायर इज दैट सेम नंबर जिसका वो स्क्वायर है. तो ये स्क्वायर किसका है? 1 माइनस साइन थीटा का है. तो व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर? कैन आई रब दिस रफ कॉलम? ये रफ कॉलम कॉपी कर लो आप. Yes, miss. रफ कॉलम में करना है. ये जो काम है रफ कॉलम में ही करना है. किया आपने? ओके, सो नाउ आई विल कंटिन्यू हियर. ओके, यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ सम. सो व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर ब्रैकेट? दैट पर्टिकुलर ब्रैकेट इटसेल्फ 1 माइनस साइन थीटा. व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर थीटा? कॉस, द स्क्वायर कॉस. स्क्वायर कॉस इज द कॉस इटसेल्फ, राइट? सो इसका स्क्वायर रूट निकाल के मुझे यहाँ लिखना है. सो नो नीड ऑफ स्क्वायर रूट साइन नाउ बिकॉज वी हैव रिमूव्ड द स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर्स इनसाइड. Okay, so what is my answer? 1 minus sin theta upon cos theta. Next step. Now I will write this 1 minus sin theta separate. I will separate the denominator of 1 and sin.